the whole event has been organized to sort of point out that Supreme Court is not implementing its judgment, and I have quite clearly understood that. काफ़ी देर लगी है, 2-3 घंटे लगे यही बताने में, लेकिन मुझे समझ आ गई है और इंशाअल्लाह मेरा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं रहा. मैं तो आज पहली दफ़ा सुन रहा हूँ कि ये केस यूँ था और इतना अरसा हो गया इसको. लेकिन एक करेक्शन मैं ज़रा करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से. जनाब ने कहा कि मैं एक्टिंग चीफ जस्टिस हूँ, ये बात शायद माजरत से ठीक नहीं थी. आई एम अ सीनियर जूनियर जज. हमारे चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, इज़ फुल इन कंट्रोल, ही इज़ देयर. और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अल्लाह उनको बहुत ज़िंदगी दे, और वो कंट्रोल में हैं और वो कोर्ट में हैं, तो मैं सीनियर जूनियर ठीक हूँ. बहुत शुक्रिया इस बात का. लेकिन आपको मैंने कहा ज़रा क्लैरिफिकेशन कर दूं. आपने कहा एक्टिंग, तो ज़रा मुझे लगा कि मुनासिब नहीं था. अच्छा, फिर ठीक. इम्प्लीमेंटेशन के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ. डायरेक्शंस के, आई एम सॉरी, आई एम जस्ट मिक्सिंग इंग्लिश एंड उर्दू. आई अंडरस्टैंड वी हैव फॉरेन डेलीगेट्स here, but few things from the heart can only be said in our national language. So I will keep switching, and my apologies in advance to the. Excellent. चलो फिर तो सारा उर्दू में ठीक है, फिर तो अंग्रेजी की भी जरूरत नहीं. Excellent. I am very happy to note that. मैं इम्प्लीमेंटेशन पे आना चाह रहा था कि ये पॉसिबल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो. लेकिन यहाँ आपके सामने एक मिसाल बनी हुई है जिसमें बड़ी देर हो गई है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए. मैं देख रहा हूँ कि 2014 की जजमेंट है और इसमें लास्ट हियरिंग जो मैंने रिकॉर्ड चेक किया है, जो इफेक्टिव हियरिंग हुई है, वो 30 नवंबर 2022 में हुई है. 23 में गलत बेंच के सामने लग गया, तो उन्होंने कहा 2 मेंबर है, लग नहीं सकता, और 2024 में हम आ गए हैं. So as I said, मैं personally I apologize for this. I will take it up and try to take it further. But I want to underline, and क्योंकि सब बैठे हैं और वो समझते होंगे कि इस तरह ही शायद जजमेंटें इम्प्लीमेंट नहीं होती सुप्रीम कोर्ट की, ऐसा नहीं है. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स बिल्कुल इम्प्लीमेंट होती हैं और यही स्ट्रक्चर है आइन का भी. और मैं थोड़ा सा इसके बारे में कहना चाहूँगा. रिसेंटली भी हमने कहा कि ये बात बिल्कुल क्लियर कर लें कि ये कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो. ये नहीं हो सकता. ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस को रिकग्नाइज करना है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है बट टू कंप्लाई विद दी ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ये मैं नहीं कह रहा, ये आइन कह रहा है. आइन का ये स्ट्रक्चर है और ये अथॉरिटी ड्रॉ करती है सुप्रीम कोर्ट आइन से, किसी और डॉक्यूमेंट से नहीं. किसी के पास चॉइस नहीं है कि वह बयान करे कि ठीक नहीं है या गलत है. आइन कहता है कि ये जजमेंट है, ये जजमेंट इंप्लीमेंट होनी है, यही तरीका है. या फिर चेंज कर दें सारा स्ट्रक्चर, कुछ और बना लें, लेकिन जो आइन है इस वक्त, जो आइन का स्ट्रक्चर है, उसके मुताबिक तो यही पोजीशन है. और डिसरिगार्ड और डिले नहीं किया जा सकता किसी वर्डिक्ट को, वरना सारा लीगल सिस्टम को आप बिगाड़ के रख देंगे, उसका सारा बैलेंस आप खराब कर देंगे आइन का और इलीगल सिस्टम का. अगर आप इस तरफ चल पड़े कि जजमेंट्स इंप्लीमेंट नहीं होनी चाहिए, ये हो नहीं सकता. ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के भी खिलाफ है. सेपरेशन ऑफ पावर्स हमें एक काम देता है, एग्जीक्यूटिव को एक काम देता है, लेजिस्लेचर को एक काम देता है, जो हमारा काम है. वरना तो आप सारा इस सेपरेशन ऑफ पावर्स के कॉन्सेप्ट को भी टोटली आप आउट ऑफ बैलेंस कर देंगे. और ये कोर कंपोनेंट है सेपरेशन ऑफ पावर्स, कोर कंपोनेंट है डेमोक्रेसी का, और इसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. ये भी याद रखें कि जो हमारी डिसीजंस हैं, इस तरह हमने अभी सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली कहा भी है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई कर्टसी है कि आपने इंप्लीमेंट करनी है या कोई बोझ है आप पे. ये ऑब्लिगेशन है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन एंड यू हैव टू फॉलो इट. और ये बड़ा डेलिकेट इक्विलिब्रियम है आइन के अंदर, इसकी इज्जत भी करनी जरूरी है. ऑब्लिगेशन है हमारी कि हम इस बैलेंस को बराबर रखें और किसी किस्म का कोई एग्जीक्यूटिव ओवर रीच नहीं होना चाहिए. किसी के पास चॉइस नहीं है कि वो उसको सेकंड गेस करे कि जजमेंट ठीक है कि गलत है. ये उसका प्रोगेटिव भी नहीं है. प्रोगेटिव भी सुप्रीम कोर्ट का है. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, दैट हैज टू बी इंप्लीमेंटेड. दैट इज द सिस्टम ऑफ दिस कंट्री, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री. कोई नया निजाम बनाना चाहते हैं तो पहले बना लें, फिर बात करेंगे उस सिलसिले में.
موونگ آن سے یہ بالکل واضح ہو گئی بات کہ یہ کوئی جو ڈیوٹی ہے یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے اور اس کے سویئر کانسیکوینسز ہیں اگر آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے. یہ میں اس لیے واضح کرنا چاہتا ہوں اس آڈینس کو کہ اس جگہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک ججمنٹ چلی جا رہی ہے اور بڑے عرصے سے امپلیمنٹ نہیں ہو رہی, تو ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس ججمنٹ کو بھی ہم دیکھیں گے. And I assure you, as far as within my powers, I'll make sure that this judgment is implemented in letter and spirit, and we take it to its final conclusion. Now, اور یہ تو سب نے سنا ہوگا اور ہم بار بار پڑھ لیتے ہیں لیکن آگے کچھ اس پہ اثر نہیں ہوتا. ہم سب پہ 96% لوگوں پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا. تو میرا خیال ہے سوچیں اس بات کو. ججمنٹ تو امپلیمنٹ ہو جائے گی ذاکر صاحب, لیکن آپ اور میں بھی تو کچھ کریں نا ایز این انڈیویجول. یو آر فری and you're free to go to your temples, you're free to go to your mosque or to any other place of worship in the state of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed. That has nothing to do with the business of the state. یہ قائد اعظم صاحب نے کب کہا, اور آج تک ہم اس بات کو کوئی سمجھ نہیں پا رہے کہ بھئی جانے دیں جس نے جدھر جانا ہے, جس جو مذہب اپنا اختیار کرتے ہیں جائیں پڑھیں, ان کو کلچر دیں, ان کو پروٹیکشن دیں کہ یہ ڈائیورسٹی آئے, انکلوسیوٹی آئے, کچھ سوچ آئے, یہ آگے بڑھ سکیں. اس طرح پھر بے شمار آرٹیکلز میں انہوں نے پڑھے ہیں, میں جاننا نہیں چاہتا. آرٹیکل 4 دیکھیں جو یونیک آرٹیکل ہے ہمارے آئین میں. آرٹیکل 20 ہے, آرٹیکل 21, 22 and it goes on 25, 36 principles of policy وغیرہ پہ. میں آگے آپ کو اس پہ نہیں لے جانا چاہتا. It's not a lecture on the constitution, but آئین کی اندر articles ہیں, one article after the other, saying that we need to protect, give space to the minority, because if the minority flourishes, we as a nation flourish. وہ flourish کریں گے تو ہم flourish کریں گے. diversity آئے گی, سمجھ آئے گی, harmony آئے گی, peace آئے گا. یہ سب سمجھنا ہمیں چاہیے. اور میں آپس میں مخاطب ہیں, ہم آپس میں مسلمانوں سے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اس کو دیکھیں اور کیا وجہ ہے کہ ہم اتنی تنگ نظری سے ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اور ایک ججمنٹ جو کہ یہ جیلانی صاحب کی ججمنٹ کمال لینڈ مارک ججمنٹ ہے, ایک اور ججمنٹ دینے کو موقع ملا. مبارک علی والا کیس ہے سپریم کورٹ کا, جس میں یہ جو آپ کا کوٹا تھا یہ چیلنج ہو گیا. کسی نے کہا یہ بتائیں کس طرح دے دیں ہم کرسچنز کو 5% کوٹا, یہ بتائیں کہاں لکھا آئین میں, یہ تو ڈسکریمنیشن ہے. کہاں پروٹیکشن؟ آرٹیکل 25 میں تو لکھا ہے صرف بچوں کو اور عورتوں کو پروٹیکشن مل سکتی ہے. تو یہ Christians اور minorities کیسے protection لے رہے ہیں؟ So we safeguarded that 5% for you in Mubarak Ali case, and I quote some of the provisions which are important. In order to safeguard the rights of the minorities and to provide equality of status and opportunities, the state has to endeavor to bridge the gap and ensure that the non-Muslim minority in our country gets to enjoy their fundamental rights under the Constitution with the same favor and force as enjoyed by the Muslim majority and majority of persons with fuller abilities. اس میں کیونکہ ہم نے minority اس کا disabled persons کا بھی کیس تھا اس کے اندر. The word minorities signifies merely a statistical number. یہ میں پہلے بھی آپ کو عرض کر چکا ہوں, سپریم کورٹ نے ججمنٹ میں بھی کہہ دیا. The word minority signifies merely a statistical number representing a class of people in the country who are non-Muslims, and in no manner does it imply that they are lesser citizens or in any manner less entitled to the fundamental rights under the Constitution. So they have equal rights as all of us here in this room. The 96% and the 1% or the 2% have same rights under the Constitution. So this was said very strongly by the Mubarak Ali judgment. We can read it sometimes if you want to. But what I want to come to is that we need to understand that it is high time کہ ہم اپنا interfaith harmony, interfaith dialogue شروع کریں اس ملک میں اور زیادہ بڑھائیں اس چیز کو. Because ہر مذہب یہ کہہ رہا ہے, ہر مذہب اپنے آپ ہر دوسرے مذہب کو سپیس دے رہا ہے, تو پھر کیوں نہیں یہ کام ہو رہا؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. جب ہم کرسچینٹی کو پڑھتے ہیں, جب ہم سکھزم کو پڑھتے ہیں, جب ہم اسلام کو پڑھتے ہیں, سب مذہب یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی مذاہب کو جگہ دو, اسپیس دو, ایکسیپٹ کرو. تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے اور ہمارے اتنی ریزنٹمنٹ ہے, اتنی ایگریشن ہے اگینسٹ مائنورٹیز؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں ہم اتنے ناراض ہیں, اتنے غصے میں ہیں, اتنے اینگری ہیں؟ پوپ فرانسس فار ایگزامپل کہتے ہیں, جو ان کے کرسچن پوپ ہیں, dialogue is born from an attitude of respect for the other person,
from a conviction that the other person has something good to say. یہاں سے ڈائلاگ شروع ہوتا ہے. ڈائلاگ کرنا ضروری ہے, says Pope Francis. میں ان کا کوٹ کرتا ہوں جی, میتھیو the New Testament میں سے 7:12. So in everything do to others what you would have them do to you, for this sums up